Now what is very important here, ये चीज़ है मिडिल सेक्टर जो है, तो दैट इज वेयर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड कम्स. नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन कई बार आप पढ़ेंगे मैकमोहन लाइन के बारे में, राइट. व्हाट यू सी राइट नाउ, दिस इज मैकमोहन लाइन. व्हाट यू सी द रेड कलर, दिस वन, मैकमोहन लाइन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल सेक्टर, वहां पर आता है मिडिल सेक्टर में, मैकमोहन लाइन. नाउ लेट्स गो टू हिस्ट्री ऑफ इट. इसका इतिहास क्या है. मैकमोहन, अ ब्रिटिश ऑफिसर्स. So there was a, right, that time, it's a British time, this border kind of a demarcation was based. Now Himachal Pradesh, see, middle is what, Indian state of Himachal Pradesh, Uttarakhand, right. Our eastern sector में अगर हम देखें तो this is where eastern sector he comes to, Macmohan line. See here, this is Arunachal Pradesh. Where the Macmohan line comes, eastern sector. So if you look at here, this is Arunachal Pradesh. और ये हमारा बहुत लंबा डिस्प्यूट चाइना के साथ में है, अरुणाचल प्रदेश. और यहाँ पे जैसे नामखा चू, देन सुमडोरोंग चू, देन असाफिला, देन यू हैव ए लोंगजू, राइट, दिस पर दिबांग वैली, यू सी इवन दिबांग वैली, दिच्चू. तो अगर ये देखा जाए तो एक साइड में म्यांमार है, दिस साइड इज म्यांमार, दिस साइड पे लुक एट, दिस इज म्यांमार. और कई बार ऐसा भी होता है, you know, insurgency in northeastern India, and again from the Myanmar side, right, army has to face sometimes those kind of insurgent group which are operating from Myanmar side. अगर आपने फिल्म देखा होगा उरी और सर्जिकल स्ट्राइक, right, उरी और सर्जिकल स्ट्राइक, the beginning of the movie where we carry out surgical strike by entering into Myanmar border, where Indian army enters Myanmar, and then in those insurgents we flush them out, we kill them. तो अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पठानकोट और उसके बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक, पहले भी आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक्स करते रहे. तो ये जो वेरी वोलेटाइल बॉर्डर एरियाज आता है, एंड वेयर द सच काइंड ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स विच आर द नॉर्थ ईस्ट, दे ऑपरेट टुवर्ड्स द म्यांमार बॉर्डर. बट विद चाइना, 1962 war at that time, this part of Macmohan line, where China still claim that this part of Arunachal Pradesh, Tawang and all this area belong to China. Now this about Macmohan line, if you look at here, this one, eastern sector, 1140 kilometer long border with India and China. 1140 kilometer long border. Now what is very important, there is a location, Dippu Pass. उसको तालू पास भी बोलते हैं, Dippu Lake. You can see here, Dippu Lake, there will part of pass is there. From there, from Arunachal Pradesh and that part, you can go to that China part of there. Even कई बार ये भी होता है कि the villages on the border of Arunachal Pradesh, they go towards the other side where China land is there, और वो वहाँ market होते हैं, there are markets. सामान खरीदने के लिए, खरीदारी करने के लिए वहाँ के लोग जो हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में होते हैं, है ना, वहाँ पे चाइना अलाउ करता है क्योंकि चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश का वो पार्ट जो है तवांग और दीपू लेक और वो जितना एरिया है, चाइना आज भी अपना मानता है. एंड द चाइना अलाउ इवन द पीपल ऑफ दैट एरिया, द विलेजेस, टू गो टू द चाइनीज मार्केट साइड टू बाई एनी काइंड ऑफ गुड्स. वो मूवमेंट होता है वहाँ पर. एंड वी डोंट हैव एनी फेंसिंग, कोई, वी हैव सच ए लॉन्ग बॉर्डर, वी कैनॉट मेक फेंस. इट्स ऑल डिवाइडेड बाई जोग्राफिकल फीचर्स, where our Indian army guard those kind of posts. We have the posts which guard those areas there. So here, Lippu Lake, this part, and you can see a Talu Pass, which is where Tibet, India and Myanmar meets. Very important, Lippu Lake. This Lippu Lake and the Dippu Pass. The other part is Dippu Pass. The Dippu Pass hai, that is where the Tibet, again claimed by China, India and Myanmar, that get connecting point. Dippu Pass, Dippu Lake there. Now, why it's called Macmohan Line? Sir Henry Macmohan, this British officer, Sir Henry Macmohan, Foreign Secretary of British India. He was a Foreign Secretary of British time, British India.
negotiate the border agreement with between Great Britain, that time Great Britain and Tibet. Autonomous Tibet region, autonomous province of Tibet, and British India. That time the Foreign Secretary Sir Henry Macmohan, there was similar agreement. There was what? Similar agreement where Tibet, that time Tibet and Great Britain, British India, had an agreement with terms of the border. So there what you find here, border agreement with Great Britain and Tibet at the Simla Accord. Simla Accord in 1913-14. So we are talking about pre-independence. 1913-14 with Tibet. Great Britain, the British India had an agreement, Simla Accord. And there this Henry Macmahon based that Macmohan Line was drawn as a division between Tibet and India. And then now, Tibet is a part of China. So that dispute is still, China is still not ready to believe or accept Macmohan Line. चाइना उस पर नहीं मानता है वो, तो डिस्प्यूट वहाँ पर आता है. और उसमें मैकमोहन लाइन बनाने में भी क्या है, उन्होंने जस्ट सिंपली बस ज़्यादा उसको देखा नहीं, बस खाली एक प्लॉट पे बना दिया गया, दिस इज द बॉर्डर, दिस बॉर्डर हियर, तो मैकमोहन लाइन कम्स देयर. So that's it. When you say geopolitical aspect, तो you have to connect with the geographical aspect. तो बहुत important aspect आता है, right? This is what I have given here. Now if you see further, this is where you can see the photograph.